Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of the discussion is transformer. Transformer. What is transformer? It is the practical application of the mutual induction. Transformer is a such instrument which is used to increase or decrease the AC voltage. Such instrument which is used to increase or decrease the AC voltage. Usage of the transformer is common because they change the voltage with the loss of small energy. With the loss of small energy, they change the voltage. They change the voltage. In fact, many of the devices in our appliances, transformer is used. For example, it is used in stereo games and the printer. This transformer is used inside the casing, or it is connected with the cords. Now I repeat it again. Transformer is a practical application of the mutual induction. Practical application of a mutual induction. Transformer are used to increase or decrease the AC voltage. It is used to increase or decrease the AC voltage. Usage of the transformer is common because they change the voltage with relatively little loss of energy. In fact, many of the devices in our daily life, in our homes, transformer is used. For example, it is used in the printer, stereo and the stereo games. In this transformer is present in the casing or as a part of the connecting cords. Now ट्रांसफार्मर ऐसा आला है जो म्यूचुअल इंडक्शन के असूल पर काम करता है. ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज की कीमत को कम या ज़्यादा करने के लिए इस्तेमाल करता है, क्योंकि ये इंतहाई मामूली एनर्जी को खर्च करके वोल्टेज की कीमत को तब्दील करता रहता है. ऐसा आला है जो म्यूचुअल इंडक्शन के असूल पर काम करता है. ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज की कीमत को तब्दील करता रहता है, कम या ज़्यादा कर देता है, मामूली एनर्जी खर्च करके वोल्टेज को तब्दील करता रहता है. दरअसल हमारे घरों में बहुत सारे अप्लायंसेज होते हैं जिनमें ट्रांसफार्मर को इस्तेमाल किया जाता है, जैसे प्रिंटर है, स्टीरियो गेम्स. हाउ द ट्रांसफार्मर वर्क. ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है? हाउ द ट्रांसफार्मर वर्क. ट्रांसफार्मर कंसिस्ट ऑफ द टू coil which are electrically insulated from each other. It consists of the two coil which are electrically insulated from each other. One coil is called the primary coil and second coil is called the secondary coils. It is primary coil and it is secondary coil. There is no electrical connection between them. They are insulated from each other. Now, according to work of the transformer, each coil is wounded around the same iron core. One coil is called the primary coil and the second coil is called the secondary coils. Number of the turn on the primary coil is Np and the number of the turn in the secondary coil is Ns respectively. When the primary coil is connected to the source of the AC voltage, then it causes the changing the current, creates a changing magnetic field which is carried through the core of the secondary coils. I repeat it again. Primary coil is connected to the AC voltage, AC source of voltage. Changing of the current through the primary coil change the magnetic field. These magnetic field lines pass through the secondary coil. Now, changing the field induce a varying EMF. This EMF is called the mutual inductance. I repeat it again. This is primary coil. It is connected with the AC voltage. Now it changes the AC voltage into the magnetic field line. These field line pass through the secondary coil. This whole process is called the mutual inductance. I repeat it again. It consists of the two coil. One is known as primary coil and secondary coil. There is no electrical connection between them. There is the insulation between them. They are wounded with a wire. Primary coil is connected with the AC voltage. Now it causes the change in the magnetic field. These field line pass through the secondary coil. This is called the mutual inductance. Now primary turns is represented by Np and secondary turn is represented by Ns. When Vp pass through the primary coil, it creates the Vs. This Vp is directly proportional to the Vs. Now I repeat it again. When voltage of the primary coil pass through the secondary coil, it becomes the Vs. This Vp is directly proportional to the Vs.
Now secondary voltage also depend upon the ratio of the number of the turns on the secondary coils to the number turns on the primary coils. It is represented as the formula ns bata np is equal to vs bata vp. There are three definitions. One is known as step up transformer, step down transformer, and the ideal transformer. If the secondary voltage is greater than the primary voltage, it is called the step up transformer. If the secondary voltage is less than the primary voltage, it is called the step up transformer. Now ideal transformer is such transformer in the secondary circuit, secondary voltage become equal to the primary voltage, and ideal transformer dissipates no power itself, pp is equal to ps, ipvp is equal to vs is. I repeat it again. There are present the two coil, one is known as primary coil and second is known as secondary coil. There is no electrical connection between them, they are insulated from each other. Now primary turns is represented by np and secondary turn is represented by ns. Primary coil is connected with the AC voltage. Current may passing through it. This AC voltage may change into the magnetic field. These field lines pass through the secondary voltage, secondary coils. Now primary voltage is called the VP and secondary voltage is called the VS. This VP is directly proportional to the VS. VS and VP depend upon the number of the turns of the primary coil and the secondary coil. Formula can be written as NS beta NP is equal to VS over VP. There are three types of the transformer: step up transformer, step down transformer, and ideal transformer. If the secondary voltage is greater than the primary voltage, it is called the step up transformer. If the secondary voltage is less than the primary voltage, it is called the step down transformer. Ideal transformer is such transformer in which output of the secondary become equal to the input of the primary voltage. Ideal transformer dissipate the no power itself. Now it is clear, pp is equal to ps, ipvp is equal to isvs. ये किस तरह काम करता है ट्रांसफार्मर? दो कोयल पर मुश्तमिल होता है, एक को प्राइमरी कोयल कहते हैं, दूसरे को सेकेंडरी कोयल कहते हैं। इनका आपस में कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता है, इनको आयरन कोर में महफूज किया जाता है। प्राइमरी कोयल के चक्रों को एनपी और सेकेंडरी कोयल के चक्रों को एनएस से दर करते हैं। प्राइमरी कोयल को एसी से सोर्स के साथ जोड़ दिया जाता है। प्राइमरी कोयल में से एसी करंट बहने लग जाता है जो मुसलसल तब्दील होता है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। आयरन कोर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेकेंडरी कोयल में से गुजरती हैं, सेकेंडरी कोयल की वजह से करंट इंड्यूस हो जाता है। प्राइमरी कोयल के चक्रों की तरह एनपी, सेकेंडरी कोयल के चक्रों की तरह एनएस। प्राइमरी कोयल का मुहैया करता वोल्टेज वीपी, सेकेंडरी कोयल का इंड्यूस्ड वोल्टेज वीएस होता है। सेकेंडरी वोल्टेज वीएस प्राइमरी वोल्टेज के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसको फॉर्मूले से दर्ज किया जाता है एनएस बटा एनपी इज इक्वल टू वीएस बटा वीपी। ये तीन किस्म का ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप, स्टेप डाउन तो आइडियल। स्टेप अप में सेकेंडरी वोल्टेज की कीमत ज़्यादा होती है, प्राइमरी वोल्टेज की कीमत कम होती है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाता है। अगर सेकेंडरी वोल्टेज की कीमत कम हो, प्राइमरी वोल्टेज की ज़्यादा हो तो उसको क्या कहते हैं? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। आइडियल ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी सर्किट इलेक्ट्रिक पावर प्राइमरी सर्किट की इलेक्ट्रिक पावर की क्या होती है? बराबर होती है। सेकेंडरी सर्किट की इलेक्ट्रिक पावर प्राइमरी कोयल की इलेक्ट्रिक पावर के बराबर होती है, पी पी इक्वल टू पी एस के। अब इसमें ये शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है, ट्रांसफार्मर की तारीफ करें। डिफाइन दी ट्रांसफार्मर, पेज नंबर 136। ट्रांसफार्मर ऐसा आला होता है जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज की कीमत को कम या ज़्यादा करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। अल्टरनेटिंग वोल्टेज की कीमत को कम या ज़्यादा करने के लिए इस्तेमाल किया जाए, उसे ट्रांसफार्मर कहते हैं। Such an instrument which is used to increase or decrease the AC voltage. Such instrument which is used to increase or decrease the AC voltage is called the transformer. सेकेंडरी सवाल, सेकंड सवाल, स्टेप अप ट्रांसफार्मर से क्या मुराद है? व्हाट इज मीन बाय स्टेप अप ट्रांसफार्मर? स्टेप अप, व्हाट इज मीन बाय स्टेप अप ट्रांसफार्मर? 137 पेज। स्टेप अप ट्रांसफार्मर ये सच ऐसे ट्रांसफार्मर को कहते हैं जिसमें सेकेंडरी वोल्टेज की कीमत प्राइमरी वोल्टेज से क्या होती है? ज़्यादा होती है। सेकेंडरी वोल्टेज की वैल्यू प्राइमरी वोल्टेज से क्या होती है? ज़्यादा होती है। ऐसे ट्रांसफार्मर को स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। Such a transformer in which secondary voltage is larger, secondary voltage is larger than the primary voltage, it is called the step up transformer. It was the today topic. Learn it please. Thanks. Allah Hafiz.